Hello. Hello. Can you hear me? तविंदा आप म्यूट हैं? I'm saying recording started as well. जी ठीक है जी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो then we'll go over these KPIs. Okay. जी, can you see my screen? Yes. Okay. So basically like any other team ये sales team के KPIs हैं और इसके अगर आप कॉलम्स देखें तो ये KPI का नाम है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है, इसके बेंचमार्क्स क्या हैं, लो हाई प्राइस इसकी वैल्यूज क्या हैं, कौन सा सिस्टम इसको ट्रैक करेगा, इसको मेजर कब करना है आपने, और फिर इस केपीआई का ओनर कौन होगा। सो सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट केपीआई, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बड़ी बेसिक केपीआई है। बेसिकली टेल्स के एक सेल्स करने में एक अकाउंट नया अकाउंट लाने में कितने आपका एक्सपेंस हुआ है। So basically, talks about the sales spend, कितनी efficiently आपने spend किया है। So 15 to 30% एक benchmark है जो कि इसमें रखा हुआ है। बट ये वाला जो कॉलम है, आई एम रिव्यूइंग इट, मैं इसको आज फाइनलाइज करके ये आपसे शेयर करूंगा। बट आई एम जस्ट वॉकिंग यू ओवर दिस। और ये जो सा है फाइनेंस ऑब्वियसली इनके पास जाता है, इसको अपने मंथली ट्रैक करना है। ग्रॉस रेवेन्यू, ये आपके सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के क्या रेवेन्यू आता है, अगेन ये फाइनेंस जो है बताएगा, बट रिस्पॉन्सिबल इस पे मैं हूँ, सेल्स मैनेजर। नेट Okay. न्यू नेट न्यू रेवेन्यू जो है, इट इज़ ऐसा रेवेन्यू जो कि पहले नहीं था। मिसाल के तौर पे एक रिसोर्स है, वो ऑलरेडी 40 आवर्स अ मंथ काम कर रहा है, वो 60 हो गया है, तो दैट्स नॉट कंसिडर्ड नेट न्यू। सो इट्स अ न्यू एंगेजमेंट, नॉट नेसेसरली अ न्यू अकाउंट, बट विद इन अ सर्टेन अकाउंट अगर एक्सपेंशन हुई है तो वो भी इसमें ट्रैक होगा, या अगर कोई नया अकाउंट आया तो वो भी इसमें आएगा। New customer acquisition rate, number of accounts added. Um, so 10 to 20% growth. So, in an ideal situation, yes, this could be a reasonable number, but given the current situation, we'll have to revisit this number और मैं आपसे share करूँगा। Sales qualified lead वो होती है जहाँ पे कि customer ready है काम करने के लिए हमारे साथ, उनको नीड, देयर इज अ नीड, देयर इज अ बजट, एंड ही इज द राइट पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं। इट कुड हैपन इन अ लॉट ऑफ केसेस, लेकिन इसके साथ ही एक एमक्यूएल आती है। सो हमारे पास ज़्यादातर एमक्यूएल आती हैं जहाँ पे कि कस्टमर इज रेडी टू टॉक, रेडी टू बेसिकली डिस्कस देयर नीड्स, और उसके बाद when once we feel they're ready कि they're willing to start a project with us, yeah, they're willing to start about something that is immediate, they have the budget, and they're ready to pull the trigger, so that's considered sales qualified meeting. um, so number of meetings with qualified prospects, evaluate lead engagement quality, basically ये बताती है कि कितनी अच्छी lead जनरेशन की है हमने और कितना अच्छा हमने उन्हें engage किया।
उसके बाद आ जाती है जी लीड जनरेशन, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एनालाइज एंड एडेड टू पाइपलाइन। सो हमारी एक सेल्स टीम है, ऑल दे डू कि वो सारा दिन बैठ के हमने उनको डिफरेंट सेगमेंट्स बताए होते हैं। सो अ सेगमेंट वुड बी समथिंग कि हम उनको बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हमने कोई कैंपेन चलानी है। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यू नो यूरोप के 4-6 मुल्कों के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि एक सर्टन चीज मैन्युफैक्चर करती हैं, दे हैव अ सर्टन साइज ऑफ रेवेन्यू, सर्टन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट वर्क फॉर देम, और एक सर्टन नीश में वो काम करती हैं। सो दैट कुड बी वन सेगमेंट, और उस सेगमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट्स वो निकाल के उन कॉन्टैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको क्लीन करके उनको सीआरएम में डाल देती हैं। दैट इज बेसिकली कॉन्टैक्ट एक्सट्रैक्शन, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड टू द पाइपलाइन। सो ये वो वाली चीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, ईमेल कन्वर्जन रेट। सो जब ये कॉन्टैक्ट्स आ गए हमारे पास और इन कॉन्टैक्ट्स को हमने रीच आउट किया और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया आपको, और रेशियो ऑफ ईमेल सेंट टू मीटिंग्स अरेंज्ड। सो हमने लेट्स से 10,000 ईमेल्स भेजी हैं। अगर ईमेल्स की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर कॉन्टैक्ट्स की अच्छी होगी क्वालिटी, एंड उनको वाकई में नीड होगी, तो वो हमें जवाब देंगे और वो मीटिंग्स में कन्वर्ट होंगी ये ईमेल्स। सो दिस इज बेसिकली ट्रैकिंग दैट, और ये इंफॉर्मेशन आपको मेरे से मिलेगी। इसको आप वीकली या मंथली भी ट्रैक कर सकती हैं। बट आई वंस आई गिव यू दिस शीट, इसमें चेंजेस करके, सो दैट वुड बी द फाइनल वर्जन। राइट नाउ आई एम जस्ट फॉलोइंग यू थ्रू इट, वॉक थ्रू देयर। आपको क्लोजिंग रेशियो, सो हमने कॉन्टैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, ईमेल्स भेज दी, मीटिंग्स हो गई, एक्चुअली उसमें से कितने कन्वर्ट हुए इनटू कस्टमर। सो क्लोजिंग रेशियो मींस दैट, सो सो लेट्स से हमने 10,000 लोगों को रीच आउट किया एक महीने में, और उसमें से 1% अगर क्लोज होते हैं, सो दैट्स कितना बन गया, ये 100 बन गए। So जी हाँ. that would be considered that. So 30% closing rate is again, ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था, so this is a little high, तो मैं इसको ट्यून करके आपको दूंगा। फिर sales pipeline size. So when I talk to these people, these prospects, and they didn't close yet, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ जी आपसे बातचीत कर ली, आप हमें बड़े अच्छे लगे हैं, तो वी हैव अ प्रोजेक्ट जिस पे हम बातचीत करते हैं अभी, और तो मे बी वो प्रोजेक्ट महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्लोज होना है, लेकिन उस पे बात हो गई या शुरू हो गई, सो वो पाइपलाइन में आ जाता है। सो हम एक डील्स का एक टेबल हम मेंटेन करते हैं सीआरएम में। सो वहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। फिर सेल्स कोटा अटेनमेंट, हमने एक सर्टन कोटा बनाया हुआ है कि जी ये सेल्स टीम में इतने लोगों को आपने ईमेल्स भेजनी है, इतनी मीटिंग्स करवानी है, या इतने इतने नए अकाउंट्स लेके आने हैं, इतने डॉलर्स का, इतने $100,000 आपने एक महीने में या क्वार्टर में नया बिजनेस लेके आना है, या पुरानों में आपने करना है। सो वो बेसिकली उसका कोटा है हर एक सेल्स टीम का। सो ये बेसिकली आपको बताएगा कि हमने वो कोटा अटेंड किया है कि नहीं किया, सो कितने परसेंट हमने कोटा अटेंड किया। सो उस कोटा में ये आपकी सेल्स पाइपलाइन भी आएगी, क्लोजिंग रेशो, ईमेल कन्वर्जन भी आएगी, लीड जनरेशन भी आएगी, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, एंड बेसिकली विल बी गिविंग द परसेंटेज कि कितना हमने अटेंड किया। कस्टमर Okay. लाइफ, या सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सो बेसिकली एक रिलेशनशिप, एक नया कस्टमर आया या एक पुराना कस्टमर है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, financially, वो so total revenue from the client over the relationship, let's say कस्टमर आया, उससे
$50,000 की इनवॉइस जा रही है और उसने 6 महीने हमारे साथ काम किया और फिर ख़त्म हो गया, सो 300,000 एक मल्टी ईयर चल रहा है, वो मिलियंस में होगा ऑब्वियसली। सो वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, और एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क जो टेक्निकल टीम्स कर रही हैं, एंड देन द अकाउंट मैनेजमेंट, हम कितनी अच्छी अकाउंट मैनेजमेंट कर सकें, एंड इफ देयर इज अ गैप इट वुड बी हाईलाइटेड हियर और फिर हम उसको फिक्स करेंगे। Next one is resource utilization rate. So billable hours as percentage of available hours. So sales team billable तो नहीं होती, but इन्हीं matrices के ऊपर, so like lead generation, number of contacts कितनी इन्होंने extract किए, कितने लोगों को इन्होंने भेजा, कितनी जल्दी जवाब दे दिया, कितने projects close हुए, कितना net revenue आया, so यहाँ से आपको you can get these figures के हमने कितने यूटिलाइज थे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक दिन में 500 कॉन्टैक्ट्स जो हैं, दैट्स द बेंचमार्क, अगर उन्होंने वो बेंचमार्क अपना कंप्लीट किया है, सो दैट मींस के शी इज बीइंग यूटिलाइज्ड at 100%, and same goes for me. So if there is a person जो कि close कर रहा है, in this case that's me. So I can take a number of calls uh, every day. In addition to that, I can respond to people जो के potential customers हैं या जो existing customers हैं, उनके साथ मैं मेरी different meetings होंगी. So number of meetings I am holding, number of new revenue that I am bringing in, ये सारी चीजें उसके ऊपर basically reflection होगी. uh, Customer acquisition cost. So track cost effectiveness of acquiring customers. So for example, मेरी एक लीड पाइपलाइन चल रही है जो कि जिसमें नए कस्टमर्स भी हैं, पुराने भी हैं, और हमने कैंपेन्स भी हम चला रहे हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले महीने में हमारी सेल्स टीम ने बड़ी एक्सटेंसिवली डेटा एक्सट्रैक्ट किया, उनको ईमेल्स भेजी और हमने मीटिंग्स की. और लेट्स से हमारी पिछले महीने की कॉस्ट जो है वो 6 लाख आ गई, और उस 6 लाख में से अगर हमने 2 कस्टमर्स एक्वायर किए हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 कस्टमर्स. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी आ जाएगी इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, एंड दिस कुड वेरी मंथ टू मंथ, बट एक बेंचमार्क हो लेना, और ताकि नेक्स्ट टाइम उसको एज अ बेंचमार्क फॉलो किया जाए या देखा जाए कि क्वार्टरली बेसिस पे या राउंड द ईयर कौन सा टाइम बेहतर है. सो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस वो चीज़ें भी यूज हो सकती हैं. अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर चैनल वाइज. सो चैनल सेल्स में क्या होते हैं, ये जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, हमारे जो जो टीम हमारी अभी काम करती है मोस्टली आउटबाउंड ईमेल कैंपेन्स चलाती है, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज जिससे कि हम कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं. और वो चीज़ जो उनसी है आएगी. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, हम वहाँ से कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स में, या हम डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, उनसे गपशप करके, उनसे बातचीत करके कुछ उनको सेल कर सकते हैं, या जॉब साइट्स हैं वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. या हम कोई इनबाउंड लाइक मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, या हम कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ से बिजनेस जनरेट हो. सो ईच वन ऑफ दीज वुड बी कॉल्ड चैनल. ठीक है. So if we go multi-channel, like right now we are going through um, a job site, वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा हम आउटबाउंड
मार्केटिंग कर रहे हैं। सो ये हमें बेसिकली एक कंट्रास्ट बताएगा कि विच वन इज बेटर, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर किस चैनल में बेहतर है। सो तविंदा, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? Yes, yes, it is. It is. Okay, so CSAT, customer satisfaction score. So customer satisfaction, uh, so as a sales team manager, customer कितना satisfied है, it's going to depend on कि हमारी quality of work कितनी अच्छी है. So resources जो काम कर रहे होंगे, technical resources, उन पे भी rely करेगा, and then what kind of account management we are doing to basically have a hand on the pulse of the customer, ताकि चीज़ें ख़राब होने से पहले हम उनको हैंडल कर लें। सो ये उसमें होगा 80 to 90% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट। और ये आमतौर पे um, हमें कस्टमर्स इसको असेस करने के लिए हमें मे बी कोई क्वेश्चनर्स उनसे फिल करवाने पड़ेंगे, कस्टमर कितना खुश है। बट वी डोंट हैव दोज इन प्लेस राइट नाउ। जनरली once a year या twice a year या at the end of a project ये चीज़ें होती हैं, तो maybe we need to start incorporating these. वो भी मैं आपको डे एंड तक बताऊंगा कि हम उसका क्या प्रोसेस बताएंगे। कस्टमर रेफरल रेट, अगर कोई कस्टमर आपके काम से खुश होगा, लाइक आपकी डिलीवरी के काम से, so they would definitely refer you to their circle. So this is also a reflection कि हमारी टीम्स कितना अच्छा काम कर रही हैं। और अगर अच्छा नहीं कर रही हैं तो this information should go to the sales manager plus to the delivery people, कि उनको बताया जाए कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो रही है और ताकि उसको ठीक किया जाए। सेल्स चैनल डाइवर्सिटी, मल्टीपल चैनल्स मेक द कंपनी resilient. सो हम सिर्फ अगर आउटबाउंड मार्केटिंग करते रहेंगे, और आउटबाउंड मार्केटिंग अगर is not in at the moment, for example, तो we should have other channels जहाँ से कि हम मल्टी चैनल टारगेट करें कस्टमर्स को, और ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी बिजनेस लेने की ज़्यादा हो। सो राइट नाउ, लाइक आई सेड, सो 2 months from now we were just dealing with one channel, लेकिन अब हमने दो किए हैं, तो we need to increase those, और वो मैं आपसे आपसे शेयर करूंगा। Annual Okay. recur Yeah, so annual recurring revenue is the longevity of an account, shows the longevity। अब उस longevity में आपकी टेक्निकल टीम भी आ जाती है, आपकी अकाउंट मैनेजमेंट भी आ जाती है कि आपका कितना अच्छा रिलेशनशिप है उस कस्टमर के साथ। एंड वी बीन क्वाइट रिजिलियंट in that sense, लेकिन recently, due to a few things that we did, our technical teams didn't handle situations well, and the economic factors, कुछ customers lose हुए हैं, so this could be, in future we should have these in place, ताकि अगर कुछ चीज़ें चेंज हों, लाइक हम यहाँ पे अगर 100% लिख रहे हैं कि जी सब ठीक है, और एक ही महीने में हमारे दो कस्टमर्स चले जाते हैं, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो उन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। और इफ़ यू आर आस्किंग मी on a monthly basis या quarterly basis, so I should be talking to the delivery people every so often, so I have this information, और कस्टमर से बात करूं, so I'm on my toes basically. A lead response time. So lead is something, is considered to be scenario जहाँ पे कि हमने एक मेल भेजी है कस्टमर को, न्यू कस्टमर है, और उन्होंने जवाब दिया है, and they're asking to meet, or they're asking about some details because they have a project that they want to talk about. अब उसको कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स करते हैं? There have been cases जहाँ पे कि वो लीड बड़ी बड़ी स्टेल हो जाती है, सेल्स के लोग उसको ध्यान नहीं करते। सो हमने कितनी जल्दी उनको जवाब दिया उस लीड का, दैट्स समथिंग वी ट्राइंग टू ट्रैक हियर। फिर क्लाइंट चर्न रेट।
ये वही जो ऊपर बात कर रहा था कि वो कितने कस्टमर हमने लूज किए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और इन अ सर्टेन क्वार्टर अगर ज़ीरो है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई एक आधा आ जाता है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट आर वी टॉकिंग अबाउट, ये यहाँ पे ट्रैक होगी। ऑन टारगेट अर्निंग, सेल पर्सन अर्निंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वर्सेस टारगेट, सो दिस इज समथिंग आई नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये इधर एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो कि हमें करने की ज़रूरत है। सो ये आखिरी तीन चार जो हैं, चार पांच, इनको आप अपसेल क्रॉस सेल को हम किस तरह देखेंगे, स्टिल डोंट नो और हैवंट डिस्कस्ड और थॉट अबाउट कि इसको कैसे ट्रैक करना है। सो सो इनको आप जो है चर्न रेट, तो इनको आप अभी um, छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं इसको I'll discuss these और फिर I'll get back to you hopefully by day end today, और फिर आप उसको ट्रैक करना शुरू कर दीजिएगा। Any questions I can answer for you, Tavinder? No, I'll just go through all this on my own and as discussed earlier, मीटिंग जो सेट किया उसके अंदर भी एक डिस्कशन हो जाएगी और आफ्टर गोइंग थ्रू दिस अगर मुझे कोई क्वेरी हुई तो आई श्योरली लेट यू नो। तो या by far is चलें, fine and I somehow get the idea. Yeah. ठीक है, चलें, सही है जी। Thank you. थैंक यू Thank you so much. जी, अस्सलाम वालेकुम।